Hello students, on my channel TalkMaths. I am Rajeev Maheshwari again in front of you with two more problems of the chapter Matrix. Matrix में to find A inverse using elementary operations, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. उससे पहले जो भी टॉपिक्स थे कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल उनका नहीं है. एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इजी. एक अलग तरह का क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट इज प्रूविंग a पावर n बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि 11th क्लास में तुमने पढ़ा है. यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूविंग द स्टेटमेंट Pn a equal to this matrix is given, then prove that a power n equal to this. यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में एंड इन सम अदर रेफरेंस बुक. सो हाउ डू वी प्रूव? फर्स्ट वी टेक P1. द मेथड इज नोन टू यू in 11th class. What do you prove? You take P1, then you suppose that Pk is true, then you prove Pk plus 1. So P1 is true. P1 is the statement A. In place of n, we will put 1 both sides. So A equal to 1 plus 2, 3, minus 4, 1, minus 1. It means P1 is true. Let Pk be true. When Pk is true, it means A power k equal to 1 plus 2k minus 4k, k 1 minus 2k. Now Pk plus 1. Pk plus 1, that becomes A power k plus 1. And in right hand side, in place of n, you can put k plus 1. Or you can take only left hand side. Whatever you get, that you will write in such a way that in place of n, if you put a plus 1, you get that. So I am not writing right hand side right now. I am taking only a power k plus 1. Equal to a power k into a. What a power k is? 1 plus 2k minus 4k, k 1 minus 2k into what? A is 3 minus 4, 1 minus 1. When you multiply 3 plus 6k minus 4k, first row, second column, minus 4 minus 8k plus 4k. Then second row, first column, 3k plus 1 minus 2k. Then minus 4 minus 1 plus 2k. It comes as 2k plus 3 minus 4k minus 4, k plus 1 minus 3 plus 2k. Which is same as you put n in place of n, k plus 1 and you solve. So we will write it in that form only. देखिए इसको 2k plus 3 means 2k plus 2 plus 1. So it is twice of k plus 1 plus 1. That is 1 plus 2n. Similarly this minus 4 common. So it is minus 4 in place of n, k plus 1. K plus 1 in place of n, it is k plus 1. Then 2k minus 3 can be written as 2k minus 2 minus 1. That is 1 minus twice of k plus 1. That is right hand side. Or what you can do? A power k plus 1 equal to, in place of n you put k plus 1. Directly you write down right hand side. Take left hand side, simplify like this and bring it equal to right hand side. Now P k plus 1 is also true if Pk is true. So Pn is true for all n belongs to n. So this is the method to solve the question by using the principle of mathematical induction. All questions related to this will be solved by this method only.
सेम मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन हम करते हैं तो यही तरीका रहता है. नाउ वी टेक द सेकंड क्वेश्चन. If A equal to this, find A inverse using elementary operations. Elementary operations का एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने किया था, but that was for 2 by 2. Method is same. While solving this question, we should be very careful because simple calculations are there. जो गलती होगी वो calculations की थोड़ी mistake हो सकती है. I am using elementary row operations, so I am writing A equal to IA. If you are using elementary column operations, then you will write A equal to AI. 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A. देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना होता है, फिर ये दोनों 0. प्रोसेस आपको पता है. तो what I do, I interchange matrix and this row R1 and R2. 5 1 0 2 0 minus 1 and 0 1 3, the same transformation other side, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 into A. Now this is 5. In place of 5 we require 1. We know that 5 minus 4 can be 1 and 4 can easily be obtained by multiplying this 2 by 2. So R1 is R1 minus 2R2. देखिए अगर ऐसा लिखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा. हमारा पर्पस जो है वो ये है कि यहाँ पर 1 लाना, हमको ये 0 लाना, ये 0 लाना, ये इस तरह से. सो 5 minus 4 is 1, 1 minus 2 into 0, that is 1, 0 minus this becomes 2, and 2 0 minus 1 0 1 3 equal to R1 minus 2R2, 0 minus 2 1 0 1 0 0 and 0 0 1 times A. Now this is 1. We require 0 in place of this 2. So 2 minus 2 will be 0. So first row can be multiplied by 2 and can be subtracted from second row. So R2 is R2 minus 2 R1. Hello ji, 1 1 2 as it is. 2 minus 2 0 0 minus 2 minus 1 minus 4 0 1 3 minus 2 1 0 1 minus minus plus 2 to the 4, that way becomes 5 0 minus 2 and 0 and third row as it is. अभी क्या करना हमको, हर स्टेप में जैसे ही हमने ऑपरेशन किया एक बार रीचेक कर ले, जिससे क्या है कभी किसी स्टेप पर अगर गलती हो गई हो टिल द लास्ट वी कैन नॉट कैच वेयर द मिस्टेक इज. So R2 is R2 minus 2 R1. The 2 minus 2 0. 0 minus 2 minus 1 minus 4. That is correct. Now 1 0 0. ये हो चुका है पूरा. Then in place of this we have to bring 1. इसकी जगह हमें 1 लाना है. 1 कैसे आ सकता है भाई? हम क्या करें? We can write R2 as minus half R2 is minus half R2. और we can write R2 as, क्योंकि डिवाइड करना बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन रखो, R2 plus R3. एक बार ये कर लेते हैं. सो इट इज, अगर कुछ नहीं बचा हो तो डिवाइड करते हैं. 1 1 2 0 plus 0 minus 2 plus 1 minus 5 plus 3 and 0 1 3 equal to minus 2 1 0, then second plus third 5 plus 0 minus 2 plus 0 0 plus 1 and 0 0 1 times A. Now 1 0 0, अभी इस minus 1 की जगह हमको करना है 1, so we can write R2 as minus 1 times R2. So it is 1 1 2 0 1 2 0 1 3. Right hand side also minus 2 1 0 minus 5 2 minus 1. Generally with this question you are getting a choice. Other question is there, 6 marks question, इसके साथ दूसरी choice रहती है, तो जनरली वो प्रीफर करते हैं, आ जाता है. और कभी कभी ये अकेले आता है क्वेश्चन, कोई choice है ही नहीं तो हमको ये करना. Now this is 1 0 0 1. अब इन दोनों को हमें 0 करना है.
अब इन दोनों को जब जीरो करेंगे देन वी कैन राइट R1 एज R1 माइनस R2 एंड R3 एज R3 माइनस R2. ये दो ऑपरेशन एक साथ ले रहा हूं, अदरवाइज यू विल टेक सिंगल ऑपरेशन ओनली. देखिए 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 and this 0 1 2 R3 as R3 minus R2, 0 0 3 minus 2 is 1, R1 minus R2 minus 2 plus 5 is 3, 1 minus 2, 0 plus 1 minus 5 2 minus 1 as it is. Then R3 as R3 minus R2, 0 plus 5, 0 minus 2, 1 plus 1 times A. Now 1 0 0 1 0 0 1 0 0. यहाँ जीरो करना है हमको, so we will write R2 as R2 minus 2 R3. देखिए we are coming to the conclusion 1 0 0 0 1 0 0 0 1 equal to 3 minus 1 1. Now R2 minus 2 R3 minus 5 minus 2 into 5, that is minus 15. 2 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, इट इज 6. माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 2 2 टाइम्स A. सो I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A. सो A इनवर्स इज minus 5, 5 minus 2 2. I hope this is correct in the end. अगर ये सही आ गया then thank God, otherwise कुछ नहीं पता, कहीं बीच में प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है कि R3 माइनस R2 लिख रहे हैं तो उसमें कहीं प्लस माइनस एक नंबर की भी मिस्टेक हो गई, लास्ट तक आंसर पता नहीं लगेगा मैं कब गलती हो गई और गलत आ सकता है. तो ये यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो दो पॉइंट रह गए थे वो पॉइंट मैंने कवर किए. नाउ द चैप्टर मैट्रिक्स इट्स ऑल ओवर. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट उसकी, और उसके बाद आने वाले और वीडियोस में कैलकुलस, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. एंड इफ यू वांट दैट यू आर गेटिंग टाइमली न्यू वीडियोस, फॉर दैट you have to subscribe and press bell icon. Keep liking and sharing. Thank you.